या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्तदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां पुनः पुनः स्वागतं करोमि। नमस्ते महोदय। नमस्ते, सर्वेषां स्वागतं। भवन्तः सर्वे नमो नमः। नमो नमः। पटलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। नमस्ते महोदय। नमस्ते। यदा शक्यन्ते चेत् वीडियो उद्घाटयन्तु कृपया। अस्तु, इदानीं सम्प्रति वयं तिङन्तानां रूपसिद्धि इति विषयं स्वीकृत्य अस्माकं पठनं कुर्मः खलु। किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अद्यतनविषयं पुनः स्वीकरोमि। प्रकृतिः अधिकं प्रत्ययः इक्वल् टु पदं, वयं सर्वे जानीमः खलु। प्रकृतिः कतिविधा प्रकृतिः सन्ति? कतिविधाः? लक्ष्मी आर् महोदय, प्रकृतिः कतिविधाः? लक्ष्मी आर् श्रोतुं शक्नोति? How many types of prakriti are there? Prakritis. It is, this answer is not there in this chapter, what I've shared. Yeah, I know. Actually, I have not attended many of your classes. No, it is the first class. It was my first class. So we have already done, most of us have done the संस्कृत भारतेः शिक्षा तथा कोविद वर्गः। तस्मिन्नेव अपि आसीत्। वाणीश्री भगिनी, भवती वदति वा? अत्र तु नैकाः अर्थाः सन्ति। इदानीं मया सन्ति। अत्र मया न लिखितं प्रकृतिः कतिविधाः। तो प्रकृतेः नैकाः अर्थाः, प्रकृतेः अनेकाः अर्थाः भवन्ति। प्रकृति कतिविधाः? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रकृति? व्हाट वी आर डूइंग? न जानामि महोदय। there is only one root verb. There is only one root. बन्धम् and तिगन्धम् महोदय। द्विविध धातु प्रातिपदिक, धातुः प्रातिपदिक। उत्तमम् उत्तमं। धातुः तथा प्रातिपदिकं। द्विविधाः सन्ति। द्विविधः। यः शब्दः क्रियां दर्शयति सः धातुः, यः शब्दः क्रियां न दर्शयति सः प्रातिपदिकम्। तेषामपि सूत्राणि सन्ति खलु। जानाति वा प्रातिपदिकस्य संज्ञा काभ्यां सूत्राभ्यां क्रियते? वयं पठितवन्तः। किं नाम प्रातिपदिकम्? अर्थवत् धातुरात् उत्तमम्। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। यः प्रत्ययः नास्ति, अर्थवत् अस्ति,
धातुः अपि नास्ति, प्रत्ययान्तशब्दापि नास्ति, सः प्रातिपदिकं, मूलशब्दाः। परन्तु यदि एका एव संज्ञायाः वयं प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते चेत् बहुषु शब्दाः, बहवः शब्दाः तस्मात् निर्गच्छन्ति। यतोहि बहवः शब्दाः वयं धातुभ्यः प्रत्ययानां योजनेन एव वयं तेषां निर्माणं कुर्मः। अतः पाणिनिना द्वितीयं सूत्रमपि दीयते, कृत तद्धित समासाश्च। ये शब्दाः कृदन्ताः सन्ति, तद्धिताः सन्ति, समासान्ताः सन्ति, ते अपि प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नुवन्ति। So when we are going forwards, please make sure that you continue, don't forget what we have been learned in the past. So krit tadhita samasascha. So two sutras define pratipadikam. Now two sutras define dhatuhu. Who can tell? Bharti Bhagini? Dhatoho sanya kyabhyam sutrabham kriyamaणम् अस्ति? सार्वजनिको When I will ask, please, Bharti Bhagini. आम महोदय। धातु संज्ञा करने के दो सूत्र हैं, कौन से? कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। कार्तिकेय महोदय। महोदय, धातुः इति संज्ञा काभ्यां सूत्रभां क्रियमाणम् अस्ति? शः लसकतद्धिते उपदेशे अनुनासिक इति तो इत् संज्ञायाः सूत्राणि। धातु संज्ञा काभ्यां सूत्रभां क्रियमाणा अस्ति? औपदेशिक महोदय। न, नहीं। अंगसंज्ञा धातुः अभी तो मूल प्रकृति ही। एक निमिष। अंगसंज्ञा यदा वयं धातुभ्यः प्रत्यय योजयामः तदा अंगसंज्ञा भवति, परन्तु इदानीं तु वयं धातौ एव भवामः खलु। धातु संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? सर, भू आदयः औपदेशिक न प्रत्यय भूवादयो धातवः सनादन्त्या धातवः एताभ्यां सूत्राभ्यां धातु संज्ञा भवति। So you have to know this. Unless and until we do a dhatu sanya or a pratipadik sanya, we cannot add any pratyaya, because what we are dealing with, the shabda, we don't know whether it is a pratipadik or a dhatu. So yavat paryantam vayam sanyam na kurmah, tavat paryantam dhatau pratyaya sa yojanam api na kartum shaknumah. This is the first sutram, sir. This is the first sutram. Bhu adaya. भूवादयो धातवः सनादन्त्या धातवः सनादन्त्या धातवः आतिदेशिक धातवः ये संज्ञा एतेन सूत्रेण प्राप्नुवन्ति। सनादन्त्या धातवः ये धातवः पाणिनि धातुपाठे उक्ताः सन्ति ते औपदेशिक धातवः इति कथ्यन्ते। ते धातवः भूवादयो धातवः इति नाम्ना धातु संज्ञा प्राप्नुवन्ति। परन्तु ये धातूनां निर्माणं वयं सनादि प्रत्ययानां योजनेन कुर्मः, तेषां सर्वेषां सनादन्त्या धातवः इति नाम्ना इति सूत्रेण धातु संज्ञा भवति। आतिदेशिक धातवः, आम्, आतिदेशिक धातवः भवन्ति एव, परन्तु सूत्रं किं वदति? ये सनादन्त्या धातवः। यतोहि सनादन्त्या धातवः औपदेशिक न सन्ति, अनेन यदा धातु संज्ञा भवति तस्मात् अनन्तरम् इत् संज्ञा सत्वादि कार्याणि न आगच्छन्ति। That is why it is
very understand. It is to be understood that by which sanya we are doing the dhatu sanya, whether it is a Panini औपदेशिक धातु संज्ञा और असनादन्त्य धातु संज्ञा. कतिविधाः प्रत्ययाः सन्ति प्रकृतिभ्यः युज्यमानाः प्रत्ययाः. Both prakriti and both type of pratyayas. Okay. सर्वधातुकः No. चतुर्विधाः भवन्ति सप्तविध चतुर्विधाः भवन्ति सनादि एकमेकं कृत्वा So I have included both types of prakritis. So I expect both types of prakriti. Okay, the pratyayas which attach to both, which are attached to both dhatu as well as pratipadikam. Is it 12, sir? Sir, one is the dhatu, that is the sanadi. Sanadi. Sanadi krut. कार्तिकेय महोदय भवान् वदतु. धातुभ्यः के प्रत्ययाः विधीयन्ते? चत्वारि प्रत्ययाः सन्ति महोदय. सनादि, कृत्, विकरण, गण. विकरण तथा गण. तिङ् प्रत्ययः. तिङ् प्रत्ययः. तति प्रातिकेभ्यः के प्रत्ययाः विधीयन्ते? सुप्, स्त्रियाणि, तद्धित. सुप् प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः तथा तद्धित प्रत्ययः. तद्धित. सनादि प्रत्ययाः विशेषाः सन्ति. इमे प्रत्ययाः धातुभ्यः अभियुज्यते, प्रातिपदिकेभ्यः अभियुज्यते. परन्तु सर्वत्र धातु नूतनस्य धातोः एव निर्माणं भवति. They are attached to both dhatu as well as pratipadikam, but in both the cases always a new dhatu is produced. For example, patha plus nich, new dhatu called pathi. Patha plus san, new dhatu called pipati sha. Putra plus kyach, putra is a pratipadikam, plus kyach, putriya is a new dhatu. Shena plus kyang, shenaya is a new dhatu. Okay. Now, कृत् प्रत्ययः यदा धातुभ्यः युज्यते तर्हि केषां निर्माणं भवति? प्रातिपदिकम्. प्रातिपदिकानां निर्माणं भवति. उदाहरणं दातुं शक्नोति वा भगिनी? रामः इति भवति, तत्र रामः न भवति. पट् इति कृत् राम इति प्रातिपदिकं. सम्यक् अस्ति, वदतु. राम प्रातिपदिकं प्रत्ययः. योजनेन रामः इति भवति. So we are talking about the krut pratyaya, not sup pratyaya now, isn't it? Tavatu pratyaya. It is attached to the dhatu. It is patitavan, patitavati, patitam. As Satya Bhagini uktavati, Rama is a pratipadikam. No, it's a pratipadikam. What you are told is correct. But the dhatu is ramum kridayam. Ghai pratyaya. Rama iti pratipadikam. So patha dhatu plus anavul pratyaya pathaka. Patha plus lut pratyaya pathanam. Patha plus पठितः इति भवति. पठितः, पठिता, पठितम्. अस्तु. प्रकृतेः अर्थाः विविधाः सन्ति, परन्तु प्रत्येकस्य अर्थस्य अवगमनाय वयं विविधान् प्रत्ययान् योजयामः. So the Prakriti has infinite meanings, but to our understanding, to bring down to what we want to say, we are attaching a pratyaya so that we can limit its meaning to a particular pratyaya, what we want to. Like patha plus tip. Tip is a pratyaya, pratham purush ekvachanam. So pathati iti rupasya nirmanam bhavati. Now
Pathati is bound now. We cannot change this meaning. Pratham Purush Ekvachan lat lakar eva bhavati. We cannot change its artha. We cannot say it is same as pathatu. We cannot say it's same as apathat. For each and every meaning, there is a different pratyaya. That's what we learned last time. Sir, one small doubt. I think it looks very silly for me. No, but I no, want go to ahead. clear. Boliye. This pratyaya and kridantams are same or it is different? Pratyaya, Kruta is a type of pratyaya. Like Okay. Bhagini said that there are 4 types of pratyaya which are used for dhatu. One is a sanadi pratyaya, one is a krut pratyaya, one is a vikarana pratyaya, and one is a ting pratyaya. So krut is a pratyaya, type of pratyaya. When it is attached to a dhatu, we get krudantaha. Okay. We get the Thank you. krudantaha. And krudantaha are mostly pratipadikam, except twa, tumun, and lyap. Okay. Okay. Thank you, sir. Astu. तो एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आप भूल तो नहीं जाएंगे फिर बाबा? ठीक है. लास्ट टाइम वी डिड द अंग संज्ञा. अंगः इत्युक्ते किम्? मैथिली भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? धातोः परे किं किम् अस्ति between dhatu and the what is that? प्रत्यय. Pratyaya. Vikarana pratyaya sarvam tadasti. That is the angam. Just see the right hand portion. Astu. Pat. Pat adikam ti. Ti. Ti for ti. Pat is the angam now. Pat is the angam. Which sutra defines? That is, I forgot the sutra, Mahodaya. Shamyata. Yasmat pratyaya vidhi tadadi Yasmat pratyaya vidhi tadadi pratyayangam. Astu. So the dhatu or the prakriti becomes anga only when a pratyaya is attached to it. It can be vikarana pratyaya, or it can be a ting pratyaya, or subant or a sub pratyaya, or tisri pratyaya, tadhit pratyaya, whatever. Rama plus su, prathama vibhakti ek vachan pratyaya, su pratyayasya krute Rama iti anga asti. Atra patha plus ti iti drishyate. Patha. तर्हि पठति इति अस्ति. पठ इति रूपं तिप् प्रत्ययस्य कृते अङ्गं भवति. इदानीं भू प्लस ति वदतु. भारती भगिनी वदतु. तस्मिन् तु भू इति धातुः, ति इति तिङ्गप्रत्ययः, तो भू इति अङ्गः. ति इति कीदृशः प्रत्ययः? ति इति लट्, वर्तमाने लट् इति प्रत्ययः. पुनः कीदृशः प्रत्ययः? पुनः लट् लकारे प्रथम सार्वधातुक प्रत्ययः. सार्वधातुक प्रत्ययः. सार्वधातुक प्रत्ययः. प्रत्ययः द्विधा भिद्यन्ते. सार्वधातुक प्रत्ययः तथा च आर्धधातुक प्रत्ययः. आं महोदय. अब तो ऐसे करके याद होना चाहिए आपको. इसीलिए हम बोलते हैं सब वीडियो खुला रखिए तो हम सबको देख पाएंगे. तिप् प्रत्यय अस्ति खलु महोदय? हाँ. तिप्. हाँ, तो किसको सार्वधातुक संज्ञा होती है? Which pratyayas are सार्वधातुक प्रत्यय? तिंशित् सार्वधातुकम्. किं वदति इदं सूत्रम्?
इदं सूत्रं किं वदति? यदि तस्- यदि धातुः सार्वधातुक प्रत्यय भवति, सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इकारस्य अङ्गस्य गुणः भवति। नहीं, आपने सार्वधातुक प्रत्यय कहा, तो सार्वधातुक कैसे, हाउ डू यू डिफाइन सार्वधातुक प्रत्यय? परस्मैपति। अरे भाई, आप तिङ् आगे क्यों प्रत्ययः जाते हैं? महोदय। तिङ् Stay सित् at the सार्वधातुकम्। level where I am. ये प्रत्ययाः चकारः मूर्ध तालव्य शकारः संज्ञा भवति। तिप्तस्- तिप्तस्- महोदय तिङ् सित् सार्वधातुकम्। सार्वधातुकम्। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्, धन्यवादः। परंतु किं वदति इदं सूत्रम्? ये सूत्र क्या बोलता है? इत् संज्ञा लकाराणां प्रत्ययाः यस्य तथा तिङ्- च यस्य अन्ते शकारः तालव्य शकारः अस्ति तयोः इत् संज्ञा भवति। सर्वेषां ते लकाराणां प्रत्ययः वा? न इकारस्य लोट् विधि तथा लङ् इकारस्य ते गुणादेशः चत्वारः सार्वधातुकाः सन्ति तेषां। where there is a shit, it's shasya it sankhya, the Sankhya. shit tas This pratyaya is a sarvadhatuk pratyaya. And It- what type of thing pratyayas are sarvadhatuk pratyayas? lat lot लट् लोट् vidiling लट् लोट् विधि लट् लोट् लङ् तथा लङ् विधिलिङ् लकारः लट् लोट् चत्वारः। There are only 14 pratyayas are the sarvadhatuk pratyayas. No, 14 Na. pratyayas are pit pratyayas. Pit pratyayas. Now we have just going above the sarvadhatuk and ardhadhatuk. Okay. Yes. So what defines the ardhadhatuk pratyayas? शेषः अर्धधातुकः। ardhatukam सार्वधातुक ardhatukam seshah. शेषः क्या बोलता है ये सूत्र, क्या बोलता है? अर्धधातु। तिंशित को where there छोड़ is के जो भी प्रत्यय है लकार के वो सब अर्धधातुक है। अच्छा चलिए, मैंने तिंग का सभी लकार के प्रत्यय हटा दिए, सभी प्रत्यय हटा दिए तिंग के, तो क्या सभी बाकी अर्धधातुक हो जाएंगे? नहीं sir, नहीं। shit also you have to remove the shit pratyaya api. मैंने सब शीत प्रत्यय हटा दिए, मैंने सब शीत प्रत्यय हटा दिए, तो और सब तिंग प्रत्यय हटा दिए। जैसा भगिनी ने बोला, लकार के प्रत्यय छोड़ करके और जो शीत प्रत्यय छोड़ करके, तो लकार में तो 10 लकार आ गए, सभी लकार प्रत्यय मैंने हटा दिए और शीत प्रत्यय हटा दिए। आशीर्लिंग and lit lakaram yeah, it comes under ardhadhatukam. Ashirling and lit vihaya। आप ये सोचिए, सब तो सार्वधातु छोड़ के सब अर्धधातुक है। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो तिंग प्रत्यय तिंग एंड शीत सार्वधातुकम, तो सर्वे तिंग प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञकाः वा? महोदय। तर्हि के प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति? आशीर्लिंग and lit। आशीर्लिंग and lit. Well, what about others like lung Lit. pratyayah, lut pratyayah, rit pratyayah? Why? So we have done only this, right? Linga shishi and lit cha. So we again removed these two from the sarvadhatuk ting pratyaya. Now 4 and 2, 6. We have still 4 pratyayas, 4 lakaras left. Those 4. Because in lit there is an idagamaga asti kalu. because we have classified only 4 lakaras in the under sarvadhatuka. No, but why? My question is why? Why not all? Because you said in ardhadhatukam it चार looks at गण the का जो pratyaya and है there is वही no है। anga in the No, that is what I'm coming to. Sir, So, sir, one second. Sir. No, let me correct, sir. Yes, Because though बोलिए। we said lit and vidharling, ashirling are covered in the ardhadhatuka. Exactly. Balance 8 lakaras will come under the sarvadhatuka. But till now we have discussed only on 4 sarvadhatuka pratyayas. Why?
Sarvadhatu lakaras. We discussed only. No, we said lat, lot, lung and vidhiling are sarvadhatuk lakaras. Yes, Accepted. balance. Yes, Balance 2 by default is called ardhadhatuka. Panini has already mentioned ardhadhatukas. Yes. So what about the rest 4? Rest 4. Why they are not included in the sarvadhatuk lakara? They are not having They vikarna don't have pratyaya. vikarana pratyaya. They have lakar pratyaya. Lakara pratyaya. Ladeshaha. Ladesh. No, lakar pratyayas like syatasi luto ho. रो मतलब रंग और लिट्र के लिए स्य प्रत्यय है और लुट के लिए तास प्रत्यय है। जब आप तास प्रत्यय लगा देंगे, तास प्रत्यय कैसा है? वो शीत है क्या? तास प्रत्यय शीत अपि नास्ति, तिंग अपि नास्ति, अनेन आर्धधातुक प्रत्ययः भवति। So when the dhatu or the prakriti doesn't see the ardhadhatuk pratyaya, the lakar itself is an ardhadhatuk lakara. So syatasi luto ho, lit lakara, rung lakara and lut lakarasya pratyayah api ardhadhatukaha bhavanti. Now lung lakara. So what is sutra, sir? Shamitam? Syatasi luto ho. Tyatasi. Tyatas. Tya and tas pratyayah. Okay. Syatasi luto. Last time we did that. Syatasi luto ho. Okay. So he has said only lakara. See, he has not said sarvadhatuk or ardhatuk. When you see lit lakara or starting with lu, there are two. One is a lit, one is a ring. So he just said lr. So it incorporates both lit as well as ring. So both have sya as a vikran pratyaya. This is called lakara vikran pratyaya. It has nothing to do with the gana vikran pratyaya. So when you say I will do a bhavishyat kala or in the say lut lakara, sya itself comes just before the tip pratyaya. So syatasi luto ho. So sya will have added to lit lakara and ring lakara, and tas to the lut lakara, and lung lakara, chli lungi, lung lakare chli pratyaya agachyati, विकरण प्रत्यय। और चली को फिर सिच आदेश होता है, वो डिफरेंट है, लेकिन चली लुंगी ये सूत्र से लुंग लकार में चली प्रत्यय आता है, वो विकरण प्रत्यय है। सो ये भी आपको आर्धधातुक हो गया। Now you understand why these 6 are ardhadhatukas and why only 4 are sarvadhatukas. नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखिए हम लोग 4 सार्वधातुक लकार है, लट लोट लंग और विधिलिंग, ये तो समझ में आता है आपको। हाँ। और बाद में पाणिनि ने क्या कहा? आर्धधातुकम शेषः। हम उसी के आगे उसी में हम लोग बढ़ते हैं। लिंगाशिषि एक सूत्र बताया कि आशीर लिंग लकार के जो तिंग प्रत्यय हैं वो आर्धधातुक हैं। और लिट च ये सूत्र से भी बताया कि लिट लकार के तिंग प्रत्यय वो भी आर्धधातुक हैं। तो हम लोग ने 4 सार्वधातुक किए, 2 आर्धधातुक पाणिनि ने बता दिए, तो 6 प्रत्यय हो गए लकार। अब बचे 4, वो सार्वधातुक है या आर्धधातुक है कैसे बताएंगे? वो आर्धधातुकम शेषः में आएगा, क्योंकि उसमें जो विकर्ण प्रत्यय है वो लकार के विकर्ण प्रत्यय आ गएंगे। जैसे स्यतासी लुटो हो, रंग और लुट जब लकार लगते हैं तो उसके आगे में स्य करके विकर्ण प्रत्यय आता है। जैसे आप पठिष्यति आप करते हैं, भविष्यति, लेखिष्यति, जो स्य आपको सुनाई देता है वो स्य है, वो लकार का विकर्ण प्रत्यय है। ठीक है। और जो तास प्रत्यय है, चेतासी तास प्रत्यय है, वो आपको लुट लकार में आता है। पठिता, भविता, वो। सो ये दोनों, ये 3 लकार प्रत्यय फिर आपको आर्धधातुक हो गए, क्योंकि जो प्रकृति है वो डायरेक्ट तिंग प्रत्यय को नहीं देख रही है, उसके बीच में लकार प्रत्यय आ गए जो वो आर्धधातुक है।
क्योंकि ना तो वो शित है ना तो वो तिंग है। स्य प्रत्यय तास प्रत्यय न तु शित अस्ति न तु तिंग अस्ति। अनेन आर्धधातुक संज्ञकः सति अनेन आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। पुनश्च लुङ् लकारे च्लि इति विकरण प्रत्यय आगच्छति। So this lung lakar also becomes ardhadhatukam shesha iti sutrena ardhadhatuka lakaraha. Now understood why these 6 we called ardhadhatuk and 4 are sarvadhatuk. महोदय अस्तु महोदय आपने लुट और रुट के लिए स्यतासी लुटो सूत्र बताया जी। और लिंग के लिए लुंग के लिए चली लुंगी चली लुंगी। जी जी, तो लिट के लिए लिट भी आर्ध धातुक में आता है तो उसके हाँ, लिए भी आर्ध धातुक तो ये तो पाणिनि ने पहले ही कह दिया था कि लिंगाशिशी करके सूत्र है। आर्ध धातुकम शेषः के बाद में लिंगाशिशी सूत्र है और बाद में है लिट च। ये पाणिनि ने कहा है कि ये दोनों जो आशीर्लिंग लकार के जो तिंग है और लिट लकार के जो तिंग है वो आर्ध धातुक रहेंगे। ओके ओके, तो लिंगाशिशी और लिट च से लिट को भी हम आर्ध धातुक मानते हैं। तो जब हम लोग लिंग लकार हम लोग देखे थे, 2 तरह के लिंग लकार हैं, ठीक है, एक विधिलिंग है और आशीर्लिंग है। जब पाणिनि ने कहा आशीर लिंगाशिशी है वो आर्ध धातुक है, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट जो विधिलिंग है वो सार्व धातुक हो गया। जी, समझ में आ रहा है सबको? जी जी, और लिट च से भी उसको लिट च से आपको लिट लकार के तिंग प्रत्यय भी हो गए और लिंगाशिशी से आशीर्लिंग लकार के तिंग प्रत्यय भी आर्ध धातुक हो गए। जी जी, समझ गए, धन्यवाद। हाँ, क्लियर? जी। अब अंग किसको बोलते हैं? अंग किसको बोलते हैं? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र है। तो जिसको प्रत्यय का विधान किया है, यस्य शब्दस्य प्रत्ययस्य विधानम भवति, जो शब्द को प्रत्यय का विधान हुआ है वो प्रत्यय के लिए उसके पूर्व में जो शब्द है वो उसका अंग है। यदा वयम भू धातो हो तिप् प्रत्ययस्य विधानम कुर्मः, तिंग प्रत्ययस्य अथवा कोपि प्रत्ययस्य तिप् प्रत्ययस्य विधानम कुर्मः, तर्हि भू प्लस ति इति स्थिते तिपः कृते भू इति अंगः भवति। Now if the shap comes in between, kartari shap, now who doesn't see the ti, shap comes in between, becomes so shapah krute, so shapah krute idanim bhu iti angam bhavati, and ti iti pratyayasya krute भू प्लस शप अनयोः मेलनं कृत्वा यत् शब्दस्य निर्माणं भवति सः शब्दः अंगसंज्ञा प्राप्नोति। अवगम्यते वा? सो देखिए यहाँ पर जैसे भू और पहले तिप किया था, तो जब शप नहीं था तो भू डायरेक्ट तिप को देख रहा था, तो तिप के लिए भू एक अंग था। जब हम लोग को लगा कि हमको कर्तरी वाच्य बनाना है, तो कर्तरी वाच्य में सबसे पहले कर्तरी शब्द से एक शब्द का विधान हुआ विकरण प्रत्यय का। तरी विकरण प्रत्यय आगच्छति, प्रकृति प्रत्ययोः मध्ये यत् पतति तद विकरणम, प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो आके बैठता है वो विकरण प्रत्यय किया जाता है। तो ये शब्द दोनों के बीच में आके बैठ गया। तो अब जब हम ये आप पकड़ते हैं, यहाँ प्रकृति है, ये तिप प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है। आपने पहले ये पढ़ा था, ये पहले ये देख रहा था प्रकृति और ये तिंग, ये डायरेक्ट एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ शप लगाया तो ये मेरी जो प्रकृति है वो तिप को नहीं देख रही है, सार्वधातुक प्रत्यय को नहीं देख रही है, वो ये
शप को देख रही है पहले। शप भी सार्वधातुक है, लेकिन पहले ये इसको देख रही है। तो ये शप के लिए जो भू है वो पहले उसका अंग बनेगा, और जो यहाँ पर ती है, जो पहले ये हम लोग अंग कार्य कर लेंगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इसके लिए अंग होगा। समझ में आया अभी तक? के लिए अभी अंग। जैसे भू, शप और ती यहाँ पर है, तो बोलते जाइए कैसे काम बनेगा। कार्यं भवति अस्ति खलु। हाँ, किं 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 भवति, वदतु वदतु। अत्र शपः इत्संज्ञा अकार करोतु। इकः स्थाने इदु पकारस्य इत्संज्ञा भवति। लक्ष्मी भगिनी, शपः इत्संज्ञा करोतु कृपया काभ्यां सूत्राभ्यां। लसक् वदति ते शकारः इत्संज्ञा भवति। हलन्त्यम् इत् सूत्रेण पकारः इत्संज्ञा भवति। आ एव अवशिष्यते। इदानीम् आदौ किं भवति? इदानीम् अ अस्ति, भू अस्ति। अत्र शकारः इति अकारः दृश्यते। कीदृशः अकारः अयं? पित् अपि अस्ति, परन्तु आदि किम् अस्ति? शकारस्य संज्ञा जाता खलु। तर्हि षित् अपि अस्ति। आं महोदय, षित् अस्ति, अनेन सार्वधातुक अपि अस्ति। सार्वधातुक तथा पित् प्रत्ययः अयम्। तत्कारणात् भू उकारः ओकारः भू। ओके, भो प्लस अ प्लस ति यान्ता। इदानीं भो प्लस अ यान्तावन्तः भव भव इव। इदानीं भव समझ में आ रहा है इतना? हाँ महोदय। भव प्लस अ प्लस ति। इदानीम् अत्र पश्यतु, भव अस्ति, भव अनन्तरं ति प्रत्यय अस्ति। धातुना this anga is an adanta अङ्कः, तत्कारणात् नथिङ्ग् परिवर्तनं भवति। सो भव प्लस् ति योजनेन भवति इति भवति। अस्तु, यदा अङ्गकार्यं वयं कुर्मः तर्हि प्रथमं सूत्रं किम् आगच्छति? सर्वत्र सर्वदा आगच्छति अदन्तम् अंगम। नहीं, जब आप अंग कार्य कर रहे हैं कुछ के साथ में, जैसे यहाँ पर भव और ती है, हम लोग ने यहाँ पर पहले भो और भू और शप प्लस ती किया था। वो सबसे पहले कौन से सूत्र से किया था हम लोग ने? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुणः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणसंज्ञा भवति। गुणादेशः भवति। कस्य गुणादेशः भवति? इकः स्थाने गुणः भवति। इकः स्थाने गुण। अत्र इकवर्ण कः? नास्ति महोदय। ऊकार अस्ति। ऊकारस्य स्थाने ओकार आदेशः भवति। ओके, लक्ष्मी भगिनी अवगन्तुं शक्नोति वा? आम्। नहीं, लक्ष्मी आर। हाँ सर। If you, at any one of you, feeling that you are unable to understand, please let me know. I will again repeat. So this is my duty as a teacher. I will make you understand till the time you understand. Okay, I don't mind repeating 1000 times. Okay,
Each of my students must understand. Yeah. So bhava and a and ti bhavati. So now the anga comes. The anga will be either ajanta or an halanta. Bhava. Now mind that first we are dividing the anga into and anga ending with a vowel or ending with a consonant. Ajanta and halanta. Halanta bhava. Ajanta matlab ending with vowel. So what type of different situations we can have? Bhava ajanta. Ajanta Ikantaha, ejantaha. Ajantaha angaha. Ajanta angaha. Okay. अजंता अंग में क्या क्या होगा? सबसे पहले अदंत अंग होगा, आदंत अंग होगा, बाद में आदंत होगा, ईगंत होगा और बाद में एजंत होगा. एजंत मीन्स एंडिंग विथ A-I-O-U. A-O-I-O. Aong, I-ouch. Pratyahara. So, when there is an adanta, it will not have any guna. If it is an ajanta, it will not have any guna adesha. Okay? So, the sarvadhatuk ardhadhatukayoho and puganta laghu padhasya cha, ये जो सूत्र है केवल इक वर्ण को गुण करते हैं. इगंत अंग को सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से गुण होता है. इगंत अंग को एंडिंग विथ ई उ र एंड र, एंडिंग विथ बोथ ह्रस्व दीर्घ. So there are 6 types of conditions. Iganta, ending with a ikara, ikara, ukara, ukara, rikara, rukara. 6 types. Okay, and now upadha. If the anga is ending, or the dhatu or anga, as when we say, is an halanta anga. Halanta. So we have to see the upadha. So the upadha, it can be have a adupad. Upadhayam hasva akara. Adupad. Upadhayam hrasva ikara. Idupad. Upadhayam hrasva rukara. Rudupad. एक मिनट. No, Rudupad. And I, U, Re, and Udupad रह गया. And Seshaha. Okay. So पुनः एकवारं कृपया वदतु so महोदय. in the upadha, what is an upadha? Before the ajanta, what comes is the upada, no? Before the Now tell me in the sutram. Alo antyat purva upadha. I have to learn the still the sutra. Now it should not become an English thing. We should define with a sutram everything. So what does the sutra say? That we will define the sutra. But first we have to have the knowledge of the sutras. It is essential for us. So here the first
iganta anga, we have known that iganta ending with a e, u, ril, ri. The sarvadhatuk ardhadhatukayoho will impart the gunadesha to the ik varna, not the whole dhatu, right? Ending with the ik varna, so only the last letter. Only the last letter. If the last letter is an ik, the only last letter will change. Similarly, in the halanta, if there is an hrasva ik, e, u and r, hrasva idupad, hrasva udupad और ह्रस्व ऋतुपद भी आप बोल सकते हैं, तो उसको पुगंत लघु पदस्य चे इससे सूत्र से गुण होगा। आप लोग ने किया था ना ये पुगंत लघु पदस्य, हम लोग ने किया था ना? न महोदय। जी किया। न महोदय। न। इसके साथ में ही मैंने तो No, we have ended, sir. We have ended with idupad, udupad. We discussed it till there. Okay. Rasva you have told. So last time we discussed about the adanta anga. 4 angas, the 4 ganas which have an adanta anga. 1, 4, 6 and 10. What are these ganas? 1, 4, 6, 10. Adadi, divadi. Adadi Adadihi, adadihi. No, adadi is the second gana. Bhuvadi, bhuvadihi. Bhuvadi, adadi. No adadi. No. First question, understand my question. Divadihi. Divadihi. divadi, tudadi, churadi. हाँ, उत्तमम. Vadi, divadi, tudadi and churadi. These ganas, dhatus of all these ganas are having an adanta anga. Okay? And all other rest have anadanta anga, which is, it can be a, it can be u, it can be anything. So vikrana pratyadesh dhatvadesh vayam krutavantah khalu. So sankshipta gunakaryam atra gunakaryam kada bhavati. We first need to understand the gunakaryam. Which sutra does make it happen? Adeng gunaha? No, adeng gunaha, it defines what is the gun varnaha. At and eng are 3 letters. ह्रस्व अकार, एकार and ओकार इको are नहीं आप अदें गुणः इत्यनेन ये वर्णाः गुणसंज्ञकाः सन्ति, तेषां विधानं भवति। गुणवृद्धि महोदय, इको गुणवृद्धि। नहीं, अब क्या बोलना चाहते हैं, मैं वही बोलना समझ। ये देखिए, हलंत धातु हाँ, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इगन्तस्य अंगस्य गुणादेश भवति। सो इगंत अंग में यदि इकार है या दीर्घ इकार है तो उसको एकार आदेश होगा, उकार है या दीर्घ उकार है तो उसको ओकार आदेश होगा, और ऋकार है और ऋकार है बहुत ही कम ही आएगा तो उसको अर और अल आदेश होता है। अब ये इगंत अंग को हम लोग ने सार्वधातुक आर्धधातुकयोः से गुण किया। अब दूसरा सूत्र आता है जो हलंत जो अंक है उसको उपधा में स्थित ह्रस्व इक को गुण करता है। पुगंत लघु पथस्य च लघु उपधायाम इक वर्णः यस्य। लघु उपधस्य, तो लघु यदि बोला है तो लघु किसको बोलते हैं? लघु का मतलब क्या? ह्रस्व क्या? ह्रस्व स्वराः। तो जब बोलता है गुण भवति
तो गुण किसको होता है? स्वर को एकः आदेश इकः इकः आदेश स्थाने इकः गुण स्थाने भवति, गुण इको गुण वृद्धि। तो जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो जो ह्रस्व इक वर्ण है, ह्रस्व इक स्वर है, उसको गुणादेश होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा है, जैसे ग्रज धातु है और लट उभधायाम ह्रस्व ऋकार अस्ति। ग्रज प्लस तिप, ग्रज प्लस शप प्लस तिप, कर्तरी शप, तो ग्रज को गर्ज आदेश हुआ, मर्ज अर आदेश हुआ, गर्जति गुणादेश। यहाँ पर स्विद खेदने, स्वेदते। ठीक है, भ्वादि गण है शिप और तिप, आत्मनेपदी है। स्विद में है ह्रस्व इक है, ह्रस्व इकार स्वी ई, तो उसको ये इदुपद धातु है, तो यहाँ पर जो इकार को एकार आदेश हुआ, तो स्वेदते रूप आपको बनेगा, स्वेदते। ठीक है, यहाँ पर आप शप और तिप है दोनों देखिए, यहाँ पर जो है वो सार्वधातुक है और पित्त है, इसीलिए गुण कार्य होगा। तो यहाँ पर लेकिन अंग नहीं है, तो सार्वधातुक आर्ध धातुक यो हो, यहाँ पर लगेगा नहीं क्योंकि ये हलंत है। लेकिन उसकी उपधा में ह्रस्व इक है तो पुगंत लघु पदस्य चे, उसमें आपको क्लिक करेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? लघु उपधायाम स्थिते ह्रस्व इक वर्णस्य गुणादेशः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः प्रत्यय परे। या प्रत्यय सार्वधातुक हो या आर्धधातुक हो, यदि हलंत धातु या अंग की उपधा में यदि ह्रस्व इक वर्ण है तो उसको गुणादेश होगा। अब एक सूत्र और आपने विसर्ग संधि में शायद पढ़ा है, ससजुषो रुहु। सकार और सजुष के शकार को रुत्व होता है और रुत्व होने से उसको विसर्ग आदेश होता है। ससजुषो रुहु, पदस्य ससजुषो रुहु। यहाँ पर प्रत्यय जो है तस थस वस मस, ताम छ, हम लोग कहते हैं ना, तिप्तस झी सिप थस थ मिप वस मस, तस थस वस मस। इसके सकार को क्यों हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं हुई? कौन बताएगा? न विभक्तौ तुस्माः, न विभक्तौ तुस्माः। विभक्तौ क्यों बताया? वाई विभक्तौ? when there is a vibhakti प्रत्यय अस्ति तत्र इत संज्ञा न भवति। विभक्ति प्रत्यय में कौन से आते हैं प्रत्यय? So sip or thing will come under the vibhakti pratyaya. Both put together. सुप और तिंग। Sup and thing. केवल सुप प्रत्यय नहीं, तिंग प्रत्यय भी आते हैं। ओके, ठीक है, That's why tas was and all it stays हाँ there. तहा, हाँ तो तस्वस रह जाता है और ससजुषोरू से उसको तहा महा वह ऐसे आदेश होते हैं। तो फर्स्ट the sakara will be converted to refa or rutva, then again kharvasane visarjaniyoho anena sutrena tasya refadesh tasya visargah bhavati. So in the iganta anga we have done the guna karya. In the halanta anga, if the updha is laghu, so in the upadha is laghu, then there will be and gunadesha by puganta laghu upadhasya cha. Okay, understood? Now when the anga is an adanta anga, adanta ending with a hrasva akara, then there is two sutram will happen, two karyas.
वन इज अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही, अपदान्तस्य अकारस्य यही प्रत्यये परे, यही यही मतलब कौन से प्रत्यय हुए? प्रत्याहार बताएगा कोई? यह प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है? हयवरट के यकार से लेकर के पढ़ते जाइए आगे, जबाइंग जबाइंग जबाइं तक। तो यही प्रत्यय परे, उसमें क्या होता है? अंगस्य, जो अकार है उसको दीर्घ आदेश होता है। उसमें जब यही प्रत्यय करते हैं तो वकारादि मकारादि प्रत्यय होते हैं, वकारादि और मकारादि। वसमस जो हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं ना, उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं, तो भवामी, भवावह, भवामह कहाँ से आता है? भव तो अंग हुआ, तो आ कहाँ से आया? तो अतो दीर्घो यही, भवामी, भवावह, भवामह। अत्र पश्यन्तु, सार्वधातुक प्रत्ययस्य प्रथम वर्णस्य यदा य व र ल ञ म गण न झ भ अस्ति, साधारणरीत्या वयं वकारादि तथा मकारादि प्रत्यया एव वयं प्राप्नुमः। तर्हि अदन्तस्य अङ्गस्य अन्तिम वर्णस्य इत्युक्ते ह्रस्व अकारस्य दीर्घादेशः भवति। सो ह्रस्व अकार को दीर्घ आकार आदेश होगा, तो आ हो जाएगा। अंग को आ होता है, ठीक है ना? हम लोग आमी आव आव जो है प्रत्यय को आमी आव आव नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। ये अंग को हम लोग दीर्घादेश करते हैं। ती सीमी बाद में जो रूप है, ती तह अंति सी थह थह, जो और उत्तम पुरुष के रूप है क्या है? मी वह मह। आमी आव आम नहीं है, ठीक है? वो हम लोग के सरलता के लिए कहा हुआ था। नाउ वी आर लर्निंग ग्रामर, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। अंगस्य ह्रस्व आकारस्य दीर्घः भवति, तर्हि यदा भव अस्ति, अंगः अदन्त अंगः, अनेन तस्य वकारादि मकारादि प्रत्यये परे दीर्घादेशः भवति। भवामि, भवामि, भवावह, भवामः। समझ में आ रहा है? सिमिलरली न य इति गतवर्गे वयं पठितवन्तः। न य इति अदन्त अंग उभयपदी धातु अस्ति, तर्हि नयामि, नयावः, नयामः। Now there is one more, this is a sandhi sutra. Ato gune. When we see here, atra pashyantu, अत्र भव अस्ति, तस्मात् अनन्तरम् अन्ति आगच्छति। प्रथम पुरुष बहुवचन, ती तः अन्ति। अत्रापि अकार अस्ति खलु? अत्रापि अकार अस्ति, तर्हि किं भवितव्यम्? सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ भवितव्यम्। तर्हि भवान्ति इति स्यात्, परन्तु नास्ति, यतोहि इदं सूत्रं बाधते। अतो गुणे ह्रस्व पदान्तस्य अपदान्त अकारस्य परे यदा गुणवर्णः भवति, तर्हि तयोः पूर्वपरयोः पररूप एकादेशः भवति।
दोनों के टाइम जगह पर एक परवर्ण आदेश होता है। यदि उसके बाद में यदि ए है तो ए रहेगा, अकार और एकार को ए होगा, ऐ नहीं होगा। अकार और ओकार को ओ होगा, औ नहीं होगा। समझ में आया? अब गुणवृद्धि कदा निषेध्यते? वयं सर्वे जानीमः पृत् प्रत्ययाः सन्ति, अपित् प्रत्ययाः अपि सन्ति। 14 पृत् प्रत्ययाः सन्ति। सर्वे जानन्ति वा? मनसि सन्ति वा? आं महोदय। वदतु। आने आव आम पित् प्रत्ययः 14 पित् प्रत्ययाः सन्ति। आने आव आम आम ऐ आनि आव आम ऐ आवै तामहे। हाँ, कोलाहलं मा कुर्वन्तु, एकं कृत्वा वदतु। सत्या भगिनी आदौ वदतु। आनि आव आम ऐ अम् आवहै आमहै शप्। अजादि पित् प्रत्ययः। ति सि मि त स तु। त स तु। षट् प्रत्ययः हलादि पित् प्रत्ययः। तर्हि यदा पित् प्रत्ययः सन्ति तर्हि गुणः भवति, परन्तु यदा पित् प्रत्ययः अपित् सन्ति, यस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा न भवति, ते प्रत्ययः सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन सूत्रेण ङित्वत् भवति। ये सार्वधातुक जो लकार हैं, हम लोग ने तिप्तस् झी सिप्थस्थ जो किया, इसमें पकार की इस संज्ञा केवल तिप, मिप और सिप में होती है। ठीक है, एक वचन में तिप, सिप, मिप, लट लकार में, तो वो पित प्रत्यय है। बाकी जो है आत्मनेपदी प्रत्यय आप गिनिए या फिर लट लकार के बाकी जो 6 प्रत्यय हैं, तह, अंति, थह, थह, वह, मह, वो अपित हैं। वहां पर पकार की संज्ञा नहीं होती। तादृशमेव आत्मनेपदेषु अपि ते इते अन्ते से इते द्वे एव हेमहे एतेषु प्रत्ययेषु कस्यापि पकारस्य संज्ञा न जाता। अनेन एते सर्वे प्रत्ययाः अपित् सन्ति। सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन एते सर्वे 15 प्रत्ययाः ङित्वत् भवति। ङित्वत् करने का क्या मतलब है? कित और गित प्रत्यय परे गुण वृद्धि ही न भवति, गुण कार्यम निषिध्यते। किंगति च इति सूत्रेण गुण कार्य निषेध्यते। समझ में आ रहा है? गित्वत करने का कारण क्या? गित्वत करने से किंगति च सूत्र से उसका गुण नहीं होगा, गुण और वृद्धि नहीं होता है। जैसे आप आपनोति ये रूप देखते हैं, धातु कौन सी है? आप, श्नु विकरण प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर श्नु विकरण प्रत्यय किस में आता है? श्नु कौन सा गण में आता है? स्वादिभ्य श्नु, स्वादिभ्य स्वादिगण। तो स्वादिगण में श्नु प्रत्यय है। श्नु में शकार की संज्ञा होती है, इसीलिए शित है, सार्वधातुक है, किंतु पकार की संज्ञा नहीं होती, इसलिए वो अपित है, गुण संज्ञा नहीं होगी। तो जब हम लोग ने अंग बना लिया, से आपनु करके हम लोग ने अंग बना लिया, आप धातु और नु, आपनु करके अंग बना लिया। अत्र पश्यतु, अत्र आपनु करके, आप और श्नु, आपनु करके अंग बन गया। कैसा अंग है ये?
उदन्तम् उकार अस्ति उदन्तम् तर्हि इग- कीदृशः अङ्गः अयम्? इगन् उदु इगन्त उदन्त इगन्त अङ्ग अस्ति। इगन्त हा ऊर् everything comes under igantam. हा सो इ ऊर् दीर्घ ह्रस्व बोथ। नाउ ति अत्र पश्यतु ति इति पित् प्रत्ययः अस्ति। टिप् सिप् मिप् पित् प्रत्ययः खलु? Because of that thing, that apnu will become apnoti. उकारस्य गुणादेशः भवति apnoti. Now we see the second condition. Apnu plus taha. Now tell me what will happen here. It will affect the gun karya. Does it gun karya? No. So न भवति महोदय। आपनोतः समझ में आ गया? सिमिलरली आपनोषि आपनुथः आपनोमि आपनुवः आपनुमः। समझ में आ रहा है? It's the अब same देखिए। thing happening in the kru dhatu also, Mahodaya. Yes, yes. कृ प्लस कृ धातु तनादिगणस्य विकरण प्रत्ययः कः? तनादिकृभ्य तनादि उ उ उ उ उ प्लस ति टी ना now what type of pratyaya is this u vikaran pratyaya? First identify the pratyaya. Is it a thing pratyaya? Iganta. No. Pratyaya sorry. can never be iganta. Okay. You have, when the pratyaya, you have to always see the beginning, adi. It's an ajadi pratyaya. Ajadi pratyaya. Parantu ayam pratyayah shit pratyaya asti va? No. Shit nasti. Ting pratyaya asti va? न नास्ति। तर्हि कीदृशः अयं प्रत्ययः? आर्धधातुकप्रत्ययः। तर्हि इदानीं पश्यतु तस्य कृते कृ इति ऋकारान्त अङ्ग अस्ति। ऋकारान्त अङ्ग अस्ति तर्हि गुण भवति खलु? कर् इति आगच्छति। प्लस उ प्लस ति उकारस्य ओकारः karoti. So when the now the this is the anga karu. So how the kru becomes cursor? See again because so becomes sarvadhatuk ardhadhatukayoh sutram. Correct. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः किं करोति? कृ इति इगन्ताङ्ग इगन्तस्य अङ्गस्य गुणादेशः करोति खलु? इ उ ऋ ऋकार अस्ति तर्हि इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः करोति। सार्वधातुकप्रत्ययः अपि भवेत् आर्धधातुकप्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति अत्र। That means after ka, if the e or e ru ru they will get the gunasanya. Guna bhavat. So this is karu. Now here this is karu is an anga. Sir. Now here the tip pratyaya, which is a pit pratyaya. Pit pratyaya. So sir, I'm just saying example. If we take the ku, suppose the ku plus u plus tip, example hypothetically, then also the guna will happen, right? Happened. Yes. Okay. Because it is not even if it is a ardhadhatuk pratyaya, it is not stopping the gunadesha. Okay, right. Because it is not a git pratyaya or kit pratyaya. It is not correct, sir.
Right. Only Right. they stop the Only gunakar. they stop. If it is a kit pratyaya, they stop the gunadesha. Right. If the pratyaya is a nyat and a nit, it will make a vruddhi adesha. Like in the tadhitanta we have done though at upadhayam, sorry, and then achoiniti sutram. So yat nit pratyaya pare vruddhi bhavati. So we are now focusing on the guna. Now here, once it is then it is become karoti. Karoti. Kurutah kurvanti. Here again, when it is kurutah, why? Because it is not changing the guna. टित् It प्रत्यय is not नाम भवति कित्वत् भवति kitvat bhavati. There is one sutra I missed here. There is one sutra is it ut sarodhatuke, at ut sarodhatuke. So if it is an akara, so it will convert it to ukara. In the sarvadhatuk pratyaya pare, ata ut sarvadhatuke. उकारान्त प्रत्ययः अस्ति यदि कृ धातुः परे एव इति आदेशः स्यात् खलु अङ्गस्य अकारस्य उत्वं भवति. सो हियर इट इज द अंग विल बी नॉट करु बट कुरु. ओके अत्र यत् अकारः अस्ति तस्य उकार आदेशः भवति. दिस इज अ स्पेशल धातु विथ स्पेशल आदेश. Now kuruti, so karoti, kurutah, kurvanti. महोदय Now in अत्र the करोति मध्ये न भवेत् न खलु तत्र पित् अस्ति तिप्तु पित् अत्र प्रत्यय करोति कुरुतः कुर्वन्ति तर्हि कुरुतः कुर्वन्ति अत्र सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय यत्र अत्र तिप् नास्ति अत्र तः तस् प्रत्यय. यदा तस् प्रत्यय गित् प्रत्ययः भवति तस्मिन्नेव भवति यत्र. Not here tip, no, but when it is a tip, it will be karoti itself, and it is a apit pratyaya, it will be kuru iti rupam. Kurute. गित् प्रत्यय परे एव उकारादेशः भवति. सो अपित् प्रत्ययः गित्वत् प्रत्ययः भवति खलु. तो यदि प्रत्ययः गित्वत् भवति अथवा अपित् प्रत्ययः सन्ति तस्मिन् समये क्रो धातोः यत् अकारः अस्ति तस्य उकारादेशः भवति. सो दिस इज अ स्पेशल धातु तनादि गणे वयं पठामः तस्मिन् समये वयं तस्य पुनः एकवारं चर्चां कुर्मः. Now किङ्गति च इति सूत्रं गुणकार्यं बाधते खलु. तथापि मृजेर्वृद्धि इति एकं सूत्रम् अस्ति. स किङ्गति च इति सूत्रस्य अपि बाधते. So although it says the mrijer vruddhi, so mrij dhatu will always have a vruddhi adesha.
So if it doesn't matter whether it is a guna or git pratyaya bhavati अथवा नास्ति, परंतु सर्वदा एव अत्र वृद्धि आदेश स्यात्। मृजे वृद्धि यतोहि it has been specifically told by Panini that you have to do this is an adesha, so you have to do this atidesha sort of. So mraj dhatu, if it is mraja plus ti, तो इक वर्णस्य वृद्धि इति आदेश भवति, बाधित इदं सूत्रं निर्देश करोति, मर्जति इति न भवति, मार्जति इति भवति अथवा मार्जानि इति भवति। Now this is a samprasarana, we have not yet touched. Samprasarana संज्ञा भवन्तः सर्वे जानन्ति। इको यणचि इति सूत्रस्य opposite. दा इकः यण भवति, तत्र यणः इक् भवति, गित् प्रत्यये भवेत् परते। यदा अपित् प्रत्ययाः सन्ति तस्मिन् समये तस्य सम्प्रसारणं भवति। प्रच्छ इति अस्ति, अत्र श इति तुदादिगणस्य धातुवयम्, तुदादिभ्यः शः। अत्र प इति पकार रेफ अस्ति अत्र, परन्तु यदा शित् प्रत्यये परे गित् सार्वधातुक प्रत्यये परे, अत्र शकारः गित् अस्ति, शित् अस्ति, परन्तु अपित् अस्ति, अनेन गित्वत् भवति, संप्रसारणं भवति। सो रेफ का ऋकार हो जाता है अपित् प्रत्यय परे अथवा गित् प्रत्यय परे। तो संप्रसारणम में सर, संप्रसारणम उल्टा, यण इको यणची का उल्टा कर दीजिए, यण को अच आदेश होगा। इक को यण आदेश हुआ था, अब यण को इक आदेश होगा। ओके राइट, ओके राइट, ओके। तो धातुगणम् अनुसृत्य विकरण प्रत्ययः कुत्र आगच्छति? यदा गणविकरणः कुत्र आगच्छति? कोऽपि वदति वा? When are we supposed to use the gana vikran pratyayah? Sarvadhatu प्रक्रियायाम सार्वधातुक प्रक्रियायाम कदा भवति? कर्तरि कर्मणि कर्त्रार्थे, केवल कर्तृवाच्ये एव भवति। अस्तु, गणविकरणानां नामानि भवन्तः मनसि सन्ति वा? किंचित किंचित विस्मृतवती। धीरे धीरे आप याद करिए। फर्स्ट भ्वादि गणस्य शप् कर्तरि शप्, इतः मया लिखितम्, इदानीं वदतु। भ्वादि गणस्य शप्, हाँ, भ्वादि अदादिः, अदादिगणे I think शप् श्लु लोपः भवति, तस्य लोपः शप्लुक् अदादि भवाद्यादि अदादि जुहोत्यादिः अगेन श्लु भवति, नो शप् श्लु and then जुहोत्यादि दिवादिः, that's a fourth thing, then shna दिवादिः shna भवति महोदय। See here, that's why I'm getting दिवादिभ्यः यकारः अस्ति, यकारः एव अवतिष्ठति, श्यन् and then shnu shnam shna, स्वादिभ्यः स्वादिष्णु तुदादिभ्यः, महोदय I'm lost, sorry, क्षम्यताम्। ओके, स्वादिभ्यः श्नु, सत्या भगिनी वदतु। तुदादिभ्यः शः, रुधादिभ्यः श्नम्, श्ना, तनादिभ्यः उ,
क्रयादिभ्य क्रियादिभ्य श्ना श्ना अका चुरादिभ्य निच निच शप णिच एंड निच शप योग शप शप निच णिच एंड शप उत्तम। महोदय तो पृच् इति धातु अस्ति खलु महोदय, तत्र पकार रेपः अस्ति, रेपस्य स्थाने ऋकारः गुणादेशः भवति। ऋकारः रेफस्य गुणादेश न भवति, रेफस्य संप्रसारणं भवति, संप्रसारणं भूत्वा रेफ ऋकार आदेशः भवति। आं महोदय, पृ इति भवति महोदय पृच् धातोः उपधा वर्णः कः? वदतु, भवती अपि वदतु। च एव महोदय वा? च एव महोदय, च एव। पकार ऋकार चकार छकार अथवा पकार रेफ चकार छकार प्रच्छ महोदय इति एकः धातु। सन्देहः अस्ति द बेसिक् तत्र इन् बिट्वीन् चकारं कुत्र आगच्छति महोदय? पृच् इति भवति, पृ अधिकं चकारं इन् बिट्वीन् नो व्हाट इज द धातु? सी प्र छ, दिस इज द धातु। आं महोदय। हाँ, तर्हि चकार कुत आगच्छति? चकार तो अस्ति एव तत्र। उपधा मीन्स इट कैन बी बोथ परे इज उपधा। No. पूर्वं। Why? So we have to see here what is the upada. Chakara tasmat पूर्वं किम् आगच्छति? पूर्ववर्ण कः? अत्र छकार अस्ति। हाँ, this is the way. औपदेशिक धातु किं महोदय? पृच् इति पृ चकारम् अंड अनुनासिक वर्णम्। हाँ, अदन्त अकार अनुनासिक अस्ति, अकार अनुनासिक अस्ति। आं महोदय। इन् बिट्वीन् चकारं कुत्र अस्ति? पृच् इति औपदेशिक धातु किं महोदय? पृच्छ। आम्, दिस इज नॉट पृच्छ, नॉट ऋकारान्त धातु। एक मिनट, आई एम जस्ट प्रच्छ एव सर, प्रच्छ। प्रच्छ एव। प्रच्छगीप्सायाम् इति धातु अस्ति औपदेशिक अवस्थायां। हाँ, 1413 धातु नंबर। So why there is a addition of chakara before the chakara? That you wanted to ask? महोदय, आं महोदय। I think एक सूत्र मैंने अभी तो नहीं पढ़ा है, जो संप्रसारण का सूत्र है वो प्रच्छ तो है, और छेच एक सूत्र हम लोग संधि सूत्र आपने को पढ़ा है, छेच। तो यहाँ पर जब कोई ह्रस्व स्वर होता है और उसके बाद में छकार होता है, तो दोनों के बीच में चकार आता है। चकार नहीं आता, एक्चुअली तकार का आगम होता है, बाद में श्रुत्व संधि से चकार हो जाता है। परशु छिन्नः, तर्हि परशु प्लस छिन्नः तयोः मध्ये चकारः आगच्छति खलु। तकार आगच्छति, तस्य तकारस्य श्रुत्वं भूत्वा चकार परशु छिन्नः इति। अस्तु महोदय। Then prashnah, how will it come, sir? Which one? Checha iti sutrena. Checha iti sutrena. छेच इति सूत्रेण चकारस्य आगम भवति इति, तत्र तकारस्य आगम भवति। That is the doubt, Mahodaya, where it comes that chakaram. That's why I ask. So there is an agam of takara, tavargasya pratham varna, tugagama, what we say. Astu Mahodaya, atra avagatam. तुगागमस्य आगम अनन्तरं यत्र श्रुत्व संधि भवति, यतोहि छकार अस्ति तस्मात् अनन्तरं।
न अवगन्तुं शक्नोति वा? आं महोदय। This is the dhatu. आं महोदय। After its sanya, this comes. And then grahijya vahi, that is a samprasarana sutra. So they will become pru ich adikam a adikam. now this is rukara ref asti. See hrasva rikara asti, hrasva swara. Anena takarasya agama bhavati. So pakara and refa kalu pra prich. Okay. No, So, there is which one? What is your question, this, Lakshmi Bhagini? this prich. First one is pakara. Refa. Refa. So this is after the samprasarana. This refa will be converted into rukara. Oh, okay, okay. And so now this, when this rukara comes, so this will be hrasva swara. Tasmat anantaram yada chakara agacchati, tayoho madhye tugagam bhavati. Takarasya agamaha. So pr, ta and cha. Now this takara will be converted to chakara by shutvam. 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 Understood? आं महोदय, अत्र अवगतं महोदय। महोदय गम धातुः गच्छति रकार becomes rukara va? हाँ, गम को गच्छ आदेश होता है सार्वधातुक प्रकार में। अभी हाँ, वो सिर्फ गम को नहीं है, बहुत और सूत्र बनेंगे। हाँ, so there is one big sutra when there are 6 to 10 dhatus will be have given others like gam, gaccha, yach, dana, gra, dhva, dham. There is a big sutra. So each will have a different adesha. For example, gra को झिक्र आदेश होता है, दान को यच्छ आदेश होता है, पा को पिब आदेश होता है। ऐसे आदेश के लिए अलग एक सूत्र बनाया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Lakshmi Bhagini, you are talking to us or you are talking between the two of you? I myself is analyzing this. No, if you have any doubts, please do ask. Please do ask. I'll try to answer you. Where you are not understanding. No, this takara, because of this anunasika, you get that takara? No, not because of the anunasika. Anunasika is for the sakar itsanya. Akarasya itsanya. Yeah, itsanya. That I so after the itsanya, there is a, sorry. So this is the after itsanya, okay? Pracha is the after itsanya. Akarasya anunasik akarasya itsanya bhavati. Itsanya, that is what? So you get that. That prach is the after itsanya. Okay. Now this pra will have an that samprasaran. Pr and cha. Yeah. Cha will be as it is. So now you see the Checha Sutra kicks in because this is a Hrasva Swara before a Chakara. So there is a Tugagama happening between Rakara and Chakara. Pro, Ta, Cha. Now again this is a Chavarga Varna, so it will be a Shutvam. Yeah, Shutvam. Takara will be converted into Chakara. Prucha. Yeah, Prucha. So, shall we continue or shall we stop? Sir, this that one which is you're getting the Tugagamaha between Pru and Cha. What is the sutram, sir? Checha.
Che cha. How do you write? Che cha. Cho. Matra. एक मिनट. Che cha. We महाप्राण read this चकार in Sandhi, no? Sandhi, the Che Tugagama Sandhi we cha. studied. Okay, che cha. cha. Okay. Tugagam Okay. sandhi. Okay, sir. Che cha. Okay. This is a sutra of Tugagama sandhi. Tugagama. Okay. Vyanjan sandhi. Okay. Dhanyawad, sir. So what we have learned today is starting from the pratyaya, prakruti, types of anga. If there is a niganta anga, there will be a guna, फिर सार्वधातुक आर्धधातुकयोः. If the anga is a halanta anga, and if the upadhayam laghuik asti, tasya gunadesha bhavati uganta laghu padasya cha ityanena sutrena. यदा anga adanta asti, तत्र गुणादेश नास्ति. परंतु अतो दीर्घो यई इत्यनेन उत्तम पुरुषस्य ह्रस्व आकार अस्ति, अंगस्य ह्रस्व आकारस्य दीर्घादेश भवति. उत्तम पुरुषस्य केन कारणेन उक्तं? वकारादि मकारादि प्रत्ययाः सन्ति. अतो दीर्घो यई वकारादि मकारादि प्रत्यये परे. भवानी भगिनी म्यूट करो. अस्तु. यकारादि वकारादि प्रत्यये परे यत्र अपदान्तस्य अकारस्य दीर्घं भवति, आत्म भवति. ओके. तो नयामि, नयावः, नयामः. If the pratyayas are apit, then there is no gunadesha, but there will be, then can have a asamprasarana. Okay. And adantanga will happen for the dhatu belonging to bhavadigana, divadigana, tudadigana, and churadigana. 1, 4, 6, and 10. We have learned the anga sangya, we have learned the anga karyam, and we have started with the attaching pratyayas to the prakruti. So from next class onwards, we will start making the rupam of all 4 lakaras at the same time. We will do couple of sutras for lang lakara and lot lakara. Then we will start adding all the lakaras together. In the meanwhile, I request all of you to please do the kanthasthi karanam of the pratyayas. Of all 4 lakara, adanta anga. We'll start with adanta anga. So please do recite, do memorize the pratyayas. Because it will be difficult if you are unable to remember the pratyayas when we are making the prakriya. Okay, shall we close the class now? Yeah.